Assalamu alaikum. So let's begin this session. So yesterday we covered three scenarios, and in this scenario, hopefully we'll cover three more scenarios. So starting with the Dr. Noman Tasneem, you will be the examiner, and Dr. Osman is the candidate. Okay, sir, please go ahead. Bismillah ar-Rahman Dr. Usman, Yes, sir. uh, you are at 2 a.m. in the morning, you receive a call from your emergency that a kid is brought to the hospital with severe pain and for the past 4 hours. 3 years old kid. So you reach there, you examine, and you find in the First of all, I would like to examine the child, take complete history about the onset of swelling and any associated, how does it happen? Was it spontaneous or was it some related to some event, either trauma or anything else? Then I would like to see his vital signs, his whether he is tachycardic because he is in pain. I will give him painkillers, IV, to because painkillers will improve my examination. Then I would expose the patient and see his vital signs, pulse, respiratory rate, and whether he has a tachycardia or temperature or not. Then I will see the local examination of the swelling. On the examination, I would see any obvious tenderness. Is there any history of, I would ask about a history of vomiting, nausea, or constipation from the parents of the child, and I will see the swelling, whether it is in guinal region or it is in the scrotum, or whether there is redness over the swelling or not, whether cough impulse is present or not, and whether swelling is reducible or not reducible. And what else would you like to see? What else would you like to see in the scrotum? I would also see the lie of the testes of the scrotum because acute scrotum testicular torsion is the one of the most important causes of Okay, obstructed hernia. so right scrotum is empty. There is no nothing palpable in the right scrotum. It means How that will you proceed? it means that I will ask the patient whether it was a history, he had the history of undescended testes or not, because patients with undescended testes have more chances of testicular torsion. So I So would the parents don't know anything. The parents don't know anything about it. How will you okay, then I proceed? will after a complete thorough examination, I will ask my radiology colleague to do the ultrasound of the swelling, because my differential diagnosis will be uh, testicular torsion, abscess in the inguinal region, and any obstructed hernia, and any if there is any history of trauma, then there can be uh, hemorrhage. And I will see do the ultrasound, and would like to know the findings of ultrasound. So ultrasound. Simultaneously, I will examine his abdomen to see Hmm. whether it is distended or not. I will also do the digital rectal examination of the patient and try to know whether there is any obstructed hernia or not. So the ultrasound shows a testicular testis, right testis lying in an inguinal canal, and associated hernia. Okay, it means How that will you I would, proceed? yes, then I will also write to the radiologist to see the viability of the testis. I will explore I will resuscitate the patient. Simultaneously, I will arrange for OR because it can be, obstructed irreducible hernia, or there can be PPV associated with the testicular torsion. So I will inform the OR, and while resuscitating the patient, I will, if the facility of pediatric surgeon is available, I would call the pediatric surgeon to help me, and I simultaneously at the same time I will arrange uh, for OR and activate the OR team for a possible operation. And if pediatric surgeon is available, I will ask him to operate. And if it is not available, then I will open the inguinal canal and see whether there is any viability of the testes, and
If there is any hernia, I will How will you assess viability of the testis? first of all, I would like to see the color of the testes, whether it is shiny, pearly white or not. I will also see their peritesticular or inguinal inflammatory fluid, and I will if there is any torsion, I will detort the testes, rotate and place the testes in its normal position, and again pack it with a warm saline for 5 minutes and give and reassess if there Okay, is so a so on exploration, the testis is viable. Now, what will you do? after if testes are viable, then I will do the herniatomy of the because you are saying that patient has a previous history of hernia, so he might have PPV. I will do the herniatomy, and I will also, because there was undescended testes, I will lengthen the spermatic cord and do the 3-point fixation of the affected testes and place it into the subdilatus pouch. And I will also do the fixation of contralateral testes because the risk of torsion in other testes is also high subsequently. Okay. So, what ideally, when ideally should this child should have undergone this surgery? Uh, You are telling neuropexy. because the ischemic testes can become congruent as early as possible within 4 to 6 hours. One should not No, waste. no, this undescended testis, ideally, when he should have undergone this surgery. Preferably before 1 year of age. He should undergo the orchidopexy before 1 year of age. Uh, Okay. And what complications are expected with this undescended testis? undescended testes, because they lie in scrotum, so they become atrophic and non-functional, and they are more prone to, as they were lying in inguinal region, they are more prone to trauma while playing, or there is a and there is also more risk of torsion as well. Okay. Any other Uh, thing? and there is torsion, there is infiltrability, there is chances of atrophy, and they are more liable to become strangulated, and traumatic damage to the testes can occur if they lie in the inguinal region. Okay. So the on second post-op day after surgery, the child has still not passed flatus, and the abdomen is a bit distended. What will you do now? I will place NG tube and I will do the X-ray abdomen to see whether there is any signs of obstruction or not. And I would do the ultrasound to see ultrasound of the abdomen to see any free fluid in the abdomen. I will perform digital rectal examination to see whether there is any empty rectum or there is a stool. And I will Any other tests? Any other tests you would like to order for abdomen. for this condition? Any other tests you would like to order? I would like to order no other test. I would like only ultrasound and X-ray abdomen and lateral decubitus position. I would like to see, and Okay, so X-ray shows signs of obstruction at this stage, and ultrasound shows probably a small gut loop which is entrapped in the at the surgical site. okay, then What you will do now? uh, I will do the. I will contact the pediatric surgeon and uh, Pediatric surgeon is not available, and the child is having septic signs like tachycardia, and he's developing fever for the past uh, 24 hours. now I would like, because there is probably some gangrenous, there is some adhesions, or there is some gangrene of the gut. I would explore the child. I will do the laparotomy and see whether there is some band uh, to which gut is How you will adherent, give or your there is. laparotomy? How you will give your how you will give your laparotomy incision in this I child? will give transverse laparotomy, transverse incision in the abdomen, and Mhm. I will do transverse laparotomy in the child, because vertically
the access is Okay, not easy. okay. On laparoscopy, you find about 4 centimeter of ileum trapped in your previous surgical site, and it is non-viable. So what will you do now? If it is non-viable, then I will do resection and anastomosis of the. I will detwist if there is a viability. I will check the color of the intestine. If No, it's not viable. pulsatility, It's not viable. then I will do resection and anastomosis, primary anastomosis of the ileum. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Welcome. हाँ भाई शफाकत Yeah, well done, sir. Sir Numan, you prepared a very good scenario. अच्छा इसमें एक तो उस्मान एक तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस में कैंसर का जिक्र जरूर करना है हाँ ठीक है प्रेगनेंसी Complication, ठीक है ना what is the most important thing? Most important thing in this patient. So the patient presented with a severe abdominal pain and vomiting as well. नहीं testicular Vomiting inguinal as well. pain. Inguinal pain. Okay, inguinal pain. And what else? So why did the patient, because of the examiner switched it to the patient probably had obstructive hernia. So that means scenario should have included the vomiting and distension as well. But there will not, maybe or may not be the distension. So was there, did you ask for the abdominal distension? Did the child has passed fetus, stool or not? जी सर नहीं वो मैंने पूछा पूछे तुमने हैं पूछा नहीं है तुमने पूछा नहीं है लेकिन मैंने ये पूछा कि So जो है this ना is very important. उसको वॉमिटिंग हो रही है नहीं हो रही Okay. वॉमिटिंग No, और कॉन्स्टिपेशन का पूछा लेकिन उसका कोई vomiting जवाब नहीं also मिला but need to, वॉमिटिंग का जब पूछा what is the take home message out of the scenario? Not this patient, no, this patient required a re-exploration. And initially, it was a strangulated hernia, but that hernia was missed. Now, what's the take home message? So the take home message is once the examiner is giving the symptoms, the complaints, the patient is having a severe abdominal pain. So severe abdominal pain in a child, so you are thinking about the hernia. So a simple hernia will not cause this severe abdominal pain. So we must ask, is the child having a vomiting, complaining of vomiting, and any constipation, is passing flatters? What is about the abdomen? Is it distended or not? Is there any swelling? Is it tense or not? So we need to ask the question from the examiner. Right? yes, So because once दूसरा you इसमें explore, टाइमिंग बड़ी दूसरा इसमें टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टॉर्जन को कितना टाइम गुजरा है तो वो आपने जितनी इन्वेस्टिगेशन करानी है तो उसमें भी टाइम आपका जाया हो रहा है साथ साथ ना हाँ मतलब उसको मेंशन करते हैं बेशक कि ये टाइम मेरे पास कम है yes. So 6 घंटे होते हैं ना इसमें 6 hours 6 hours. So if you are suspecting a Tarjan and you're unable to differentiate whether it's a strangulated hernia, but obviously in case of strangulated hernia, patient will have a vomiting, he will have abdominal distension and absolute constipation, unless it's a distal hernia, which is very unlikely. अस्सलाम वालेकुम भाई Walaikum assalam. वालेकुम Sir सलाम Nizam. यार भैया आप लोग ये पीट सर्जरी का सिनेरियो क्यों डिस्कस कर रहे हैं फॉर जनरल सर्जरी But the केस examiner नहीं actually floated this scenario. एंटी ना पीट सर्जरी ना यूरोलॉजी ना न्यूरो की भी बेसिक सिर्फ ट्रॉमा के लिए थोड़ी सी ये इन चीजों पे टाइम अपना ना जाया करें अच्छा ठीक है या स्टिक टू जनरल सर्जरी ठीक है मतलब पीट्स की जनरल सर्जरी भी नहीं आती पीट्स बच्चा आएगा ओपीडी में और वो पीट सर्जन के पास जाएगा एग्जैक्टली ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है ना तो पीट सर्जरी में और इन चीजों में ये बॉस का भी यही कहना सुन ले बॉस से भाई पीट सर्जरी न्यूरो सर्जरी यूरोलॉजी टाइम ना जाया करें सर वैसे क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र नाउ वेलकम टू ऑल ऑफ यू सर ओके सर शुड आई गिव द सिनेरियो नो अब इसका चलो हमने वो सर ने उन्होंने क्या दिया कि वी नीड टू स्टिक ऑन द जनरल सर्जरी प्योरली जनरल सर्जरी फिर भी चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं ना
थोड़ा सा आप हाँ, डिस्कस कर ही लेते हैं. for example, this is a 25-year male patient who has presented with severe abdominal pain, vomiting, and how will you evaluate? So this is a scenario which I am giving to you. It's a strangulated inguinal hernia who has present. So unless you ask for whether the patient having abdominal distension or not, whether it's having absolute constipation, what are the finding of the examination, on the examination distended. So initially the scenario will be going toward the intestinal obstruction. So now you have to rule out what are the causes. Why did this patient develop intestinal obstruction? Whether there's any previous history of surgeries. So everything. So you need to ask the questions. Then you will be able to reach the exact diagnosis. Yes. Right? Or Dr. Numan was saying from where we will explore. So once we take the patient to the operation theater, so at that time we need to be very careful the hernia doesn't go back. So if it go back, it slips back. So you have while preparing for the surgery and the patient has been anesthetized, and meanwhile it slips down. Then what will be the next step? What will you do? Then we will do the formal laparotomy of the patient, because we need to assess the bowel of the patient, and And because short it of was that, we can do laparoscopy, diagnostic laparoscopy. laparoscopy. We put in the Yes. scope and see the viability of the bowel. Viability of It the could be gut. it's a viable. It's by just looking at the bowel, it's fine. There's no need of any laparotomy. There's no need of resection. Yes, if you think if this bowel is non-viable and this requires the resection, then depending upon your expertise, then you may have to go in. And at the same time, if you are going laparoscopic, putting the scope, you can repair it laparoscopic as well, provided it's not gangrene. Yes. Huh? Yeah. Okay. Yes. So moving on to the next scenario. Yes. So you will give the scenario. So we need to stick on the pure general surgery. Yes. Okay. ये बताओ strangulated hernia में हम laparoscopic hernial repair तो नहीं कर सकते? Sir, I'm talking about if the hernia it has slipped down. पेरिटोनियम में चले गए उसकी बात कर अदरवाइज नहीं. देखिए हम जो जवाब देंगे भाई स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया है, तो वो जो लेप्रोस्कोपी हर्निया आपने करना रिकरेंट इंग्वाइनल हर्निया या आपके जो स्मॉल हर्निया इवन स्क्रोटल हर्निया भी वो भी नहीं. स्क्रोटल हर्निया वी नीड टू रिड्यूस इट बैक. तो वो इट्स डिफिकल्ट. आपका लर्निंग कर्व में जितना ज्यादा आपने किया केस तो फिर आप कह सकते हैं यस आई हैव द एक्सपीरियंस. तो मेरा ख्याल है लेप्रोस्कोपिक वाला तो जो नॉर्मल हर्निया भी है ना, उसमें आप कह सकते हैं कि I will do the laparoscopy, but not in case of obstructed or strangulated hernia, unless it slips down. क्योंकि सर देखें लेप्रोस्कोपिकली जो है ना, बड़े कम लोग इतने एक्सपर्ट हैं जो इतने कर सकते हैं ना बड़े बड़े हर्निए. लेप्रोस्कोपी की जो हर्निया रिपेयर टेक्निकली डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अदर प्रोसीजर जो है. उसमें सीधा हर्निया भी इतने आराम से वापस नहीं आता. तो वो सीधे हर्निया कोई इशू नहीं है. सीधा हर्निया कोई इशू. लेकिन जो स्क्रोटल हर्निया, लार्ज हर्निया, इंग्वाइनल स्क्रोटल हर्निया, उसमें इट्स डिफिकल्ट. सो उसमें कि आपने और स्पेशली आपका स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, उसमें तो आपको मुश्किल होगा. लोग हैं वो करते हैं स्ट्रैंगुलेटेड, बाकी वो करते हैं लेप्रोस्कोपी के लिए. तो लेकिन वो हर्निया सेंटर्स में होते हैं जो लोग जो है ना, और वो वही काम कर रहे होते हैं. So should we move to the next? Who is going to answer the question? No, I will be the candidate. You will be the examiner. Who is answering? Me. Okay. Okay, Doctor. Dr. Shafakat, should I start? Yeah. A 55-year-old lady is seen in an emergency department with heartburn after starting steroids and NSAIDs 1 week ago for rheumatoid arthritis. She complains of sudden onset of epigastric pain, which become progressive over 36 hours. An erect abdominal X-ray does not reveal any free intra-abdominal air under diaphragm. Clinically, abdomen is rigid, tense, and severely tender in epigastric region. How would you proceed with this case scenario? So, just the information which has been provided, scenario. So, but looking at this scenario, it seemed to be this is the case of the perforated dudenal ulcer. But I will keep in mind the other different diagnoses of the acute abdomen, like acute pancreatitis as well. So, starting from the detail, I will take the history from the patient and perform the physical examination
and to see, obviously the patient is already taking steroids and the NSAIDs. So I would like to see what are the pulse and blood pressure, whether it's hemodynamic stable or not, and He has tachycardia with pulse rate of 110 beats per minute. She is dehydrated, and she is having board-like rigidity throughout her abdomen. so board like rigidity. That means these are signs of the pet mind. So, okay, so I will admit this patient and I will start the resuscitation. Start up with the IV You are not audible. Please, Yeah. please. Okay, so I will admit this patient and start the resuscitation IV fluids, and I will give her the antibiotics and along with the IV omeprazole. Meanwhile, I will get this contrast and CT scan and send Okay, this CT to scan. case. Thick duodenum with locules of free gas and collection in the right iliac fossa. Duodenum, thick wall duodenum with Yes. yes. Sorry, your voice is distorted. Your voice is distorted. Sorry. So the CT scan. What are the findings of CT scan? CT scan revealed thick duodenum with locules of free gas. Okay. And collection in right iliac fossa. Right. How would you proceed now? Yes. So that means there's a perforation. The perforation with the localized air collection and along with the fluid collection. So I will take the consent, high risk consent from the patient because the patient is on the steroid as well. So I will arrange the OT space and inform the educator, arrange the blood products, and get all the investigation required for the anesthesia, and then I will shift the patient for the laparotomy. Okay. On laparotomy, what would you do? But before going for the laparotomy, at the time of the laparotomy, I will make sure everything is arranged, and before starting that. So I will ask the anesthetist to give one shot of the steroid dose because she's on the she's taking already steroids, and make sure the suction is ready. And once I will perform a midline laparotomy. Once I open the abdomen through the linea alba at the level of the umbilicus, I will confirm my finding whether there's any gush of air and the fluid is coming, and take the samples for the culture sensitivity. And afterwards, if there's a fluid, I will evacuate it and I will assess. In this case, I will assess the stomach and the duodenum and what the state of the duodenum, where the perforation. Okay. At the time of surgery, you find a large friable perforated duodenal ulcer that is too large to close with a patch. What are your options? Okay, it's a duodenal. What is site of the? Is it in the first part of the duodenum? Yes, it is on the first part of duodenum. So okay, it is in the first part of the duodenum. It's large perforation which we cannot close it. Okay, the first would be to do the lavage, and then I will because it will not be able to close with the help of the gram patch. If I can put the momentum in it and close it over the momentum. If not, if that is not possible, then I can do this. You have tried to close it with the momentum, but it is so friable that your stitch is not going to stay. Okay, then there's option of applying a serosal patch or simple. I can put the serosal patch in the form of bringing up the jejunal loop and fixing it with. So if it doesn't work, then the last resort would be putting in the Foley's catheter and making it a controlled fistula. Okay, thank you. Do you enumerate some other options for the irreparable duodenal perforation? Okay, but in these cases, it's very unlikely that there's a large perforations in the duodenum. And but if suppose we have a very large, massive duodenal perforation, then we have option of doing a pyloric exclusion and doing the gastrojejunostomy with the retrograde drainage of the duodenum. Okay. At post-operatively, patient was fine. What would you advise him on the discharge? Because this patient is on steroids, but I would like to know
why she is taking steroid for the rheumatoid arthritis, and she's also taking the NSAIDs. So that means she is at risk of developing this complication again. So I will advise her to take the PPI. Um, uh, most likely she will require the PPI for lifelong till the time she is taking the steroids and the NSAIDs. Okay, okay. Thank you very much. G. For how many time would you like to give him proton pump inhibitors? Depends upon if the patient needs to take the NSAIDs for the lifelong, they are NSAIDs, then PPL will be required for the lifelong. Okay. And if this perforation had been because of H. pylori associated gastritis, what So then treatment regimen would have? that eradication therapy, as well as eradication therapy in the form of giving the PPI, where the clindamycin and metronidazole. Okay, thank you very much. Okay. G. जी इसमें सर नुमा एक सवाल तो Numan. मेरा ये Yeah. इसमें एक जी सर सवाल नुमा ये है कि आजकल ये लोग ना लेप्रोस्कोपिक भी करते हैं ये डीयू को जी सर Yeah. करते हैं Yeah. Yes, a laparoscopy, but इसका क्या हमने provided जिक्र that करना if the फिर या नहीं? patient, in this case, 36-hour duration. So patient presented after 36 hours, it's delayed presentation. If the patient have presented within 6 hours 24 hours, के ideally 6 hours, even 24 hours can be kept. So early presentation, then you can go for the laparoscopic provided patient is hemodynamic stable. and patient And has no peritonitis, frank peritonitis. yeah, इसमें तो frank peritonitis है ना? whole Because neck there is, yes, mortality is very high and you need to wash the abdomen thoroughly. So वो लेप्रोस्कोपिकली जो है ना कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो शायद नहीं बनता, लेकिन ऑप्शन होती है लेप्रोस्कोप की. और some perforation they spontaneously close. There is now there is a concept of managing duodenal ulcer with conservative measures. Just put it in a drain. If patient is not peritonitic, there is a spontaneous perforation and then it reseals spontaneously. There is no need of operation. You just put IR guided drain in the hepatomorrison pouch or subhepatic pouch. Yeah. So indications of conservative management are the patient having minimal symptoms and there is no leak. You need to get a contrast yes, and CT scan with oral contrast, and there is yes, no leak, and patient has minimal symptoms. So in yes, that case, you can attempt the conservative treatment. micro Conservative. perforations. Yeah. And secondly, sir, And मुझे patient थोड़ा सा has multiple comorbid. यस थोड़ा सा सर मुझे ये जो गैस्ट्रोग्राफिन कंट्रास्ट और बेरियम कंट्रास्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे. ये जो हर जगह हम लीक के लिए, ये हम हर जगह लीक के लिए गैस्ट्रोग्राफिन जो कंट्रास्ट है ये क्यों करते हैं? Gastrographin ओरल is जिसको actually वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट कहते it's हैं, a बेरियम water का soluble. क्या रोल है और उसका क्या रोल है? Okay. In case of the intestine, I'm talking about the peritoneal cavity. So it's a water-soluble contrast. So if there is a leak, so it will come out in the peritoneal cavity. It will not cause any reaction. कोई आपका वो नहीं. Barium क्या what barium क्या करे? Barium is inert और जब उससे निकले it will cause a chemical peritonitis which has very high mortality. जब ये निकलता है तो ये it's just like जब पत्थर नहीं होता इस तरह बन जाता है ये और chemical peritonitis. I have seen a patient with the chemical peritonitis. Barium chemical peritonitis. So it's very lethal. But in case if you are in the upper esophagus, you're talking about the esophagus, और उसके अंदर है कि स्पेशली बच्चों में कि एस्पिरेट ना करे, फिर रिस्क ऑफ एस्पिरेशन ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला की उस पॉइंट ऑफ व्यू से है तो उसके अंदर बेरियम है, क्योंकि बेरियम इनर्ट है तो उसमें पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती. जो गैस्ट्रोग्राफिन हाइपर ऑस्मोलर होता है, ये फ्लूइड अपनी तरफ सक करेगा तो पल्मोनरी एडिमा बाकी चीजें मसले मसाइल होंगे. जहां पे आपको एस्पिरेशन का रिस्क हो तो वहां पे बेरियम है. उस दिन में सर ने भी क्वेश्चन पूछा था कि ये जो हम बात कर रहे थे ना, जो बेरियम वर्सेस जो गैस्ट्रोग्राफिन. एसोफेगस की लीक के लिए थोरेसिक वाले थिन बेरियम स्टडी करवाते हैं, ये तो हाँ, मैंने थिन देखा है बेरियम. उनको या बिल्कुल बेरियम से दूसरे से होगा थोड़ा उससे रिपेयर के लिए. आउटलाइन अच्छा होता है. गैस्ट्रोग्राफिन से यू कैन मिस इट, क्योंकि ये बहुत इस तरह कंट्रास्ट जो है ना इतना अच्छा, मतलब आपको उसका क्या है कि जो विजिबिलिटी उस तरीके से. बेरियम को तो बड़ा क्लियर कर रेडियो पे एक आता है ना शेडो. ठीक है. ठीक है सर, तो चलिए इस पे हम और कोई क्वेश्चन ताकि एक
एक सिंपल परफोरेटेड डीयू में आपने पीपीआई कितने अरसे के लिए देने हैं? सिंपल परफोरेटेड डीयू फर्स्ट टाइम आपके पास अगर सिंपल है, परफेक्ट। रिपेयर वही होके अगेन, लग इफ गया है, पेशेंट इट्स नॉट रिलेटेड टू द एनएसएड यूसेज, तो फिर तो आप उसकी एच पाइलोरी रेडिकेशन देखेंगे, एच पाइलोरी को ट्रीटमेंट 2 वीक की, अगर 10 डेज या 14 डेज है। नहीं, एच पाइलोरी इरिडिकेशन के बाद पीपीआईज नहीं देने हमने? वो पीपी 6 वीक के बाद उसकी अपर जी एंडोस्कोपी भी करवानी है। 6 वीक तक उसके चलेंगे, ये दोबारा भी कंफर्म कर लूंगा, लेकिन हर 6 वीक केस में तक है। करानी 6 वीक में उसकी है? एंडोस्कोपी करानी एंडोस्कोपी है, हर केस में हील करानी कर गया, हाँ कि हील कर गया कि नहीं कर गया। है? अच्छा, ये मैं दोबारा भी 6 इसको हम दोबारा भी चेक कर लेंगे, आपको मिलता है तो शेयर कर दी, मैं भी check करूंगा इसको। अपर जी एंडोस्कोपी आफ्टर 6 वीक। ठीक है। और एच पाइलोरी हर किसी में दे दें? हाँ, एच पाइलोरी तो सर देखिए, वो टेस्ट कराया, एच पाइलोरी अगर पॉजिटिव है, एनएसएड पेशेंट नहीं ले रहा, तो फिर एच पाइलोरी की रेडिकेशन है ना। ठीक है, हम्म। चले तो ठीक। नेक्स्ट सिनेरियो पे, हाँ उस्मान, उस्मान आप यू आर म्यूटेड, अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी उस्मान। सर जब भी लीक चेक करना है कहीं पे भी, दैट इज वाटर सॉल्युबल ओरल कंट्रास्ट या रेक्टल कंट्रास्ट जो भी है। हर जगह पे नहीं, अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर है, मतलब इस जो ठीक है। आपके गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन लेके रेक्टम तक, अगर ठीक यहाँ है। पे अपना लीक सस्पेक्ट कर रहे हैं और गैस्ट्रोग्राफ देना कोई कंट्रास्ट, तो अपने गैस्ट्रोग्राफिन देना। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक यू सस्पेक्टिंग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कंट्रास्ट देना तो गैस्ट्रोग्राफिन देना, बेरियम नहीं देना, क्योंकि बेरियम अगर आपने ऑब्स्ट्रक्शन की सूरत में दे दिया, वो वहां पे जाके है। स्टक करेगा और आपकी obstruction और एग्रीवेट हो सकता है, परफोरेट कर देगा। और ये जो इसोफेगस के लिए चेक करते हैं हाँ, वो एसोफेगस में थिन बेरियम, थिन बेरियम और थिन गैस्ट्रोग्राफिन दोनों दे सकते हैं। थिन गैस्ट्रो, वो ये ना, अगर रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है ना, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन किस हम्म। में होगा, ट्रेकियोवेसोफेजियल फिस्टुला उसमें होगा, या बच्चे उनमें होगा, तो उनके अंदर हम्म। हो तो फिर आप उसके बेरियम जो है ना, बेरियम अगर लंग्स में भी चला तो इनर्ट है, तो कोई दूसरा न्यूमोनाइटिस नहीं करता, लेकिन ये अच्छा। गैस्ट्रोग्राफ में जाता है तो वो बड़ा सीवियर किस्म का होता है उससे। ठीक है। तो ये है रिस्क ऑफ एस्पिरेशन का बेसिक। हम्म। ठीक है, ठीक तो शुड वी मूव टू द नेक्स्ट सिनेरियो। है। यस। बस मैं लास्ट मैं करते हैं। मैं करूं जी शेयर। अब सर जी नुमान सर। होंगे एग्जाम कैंडिडेट, और जी मैं सर। हूँगा एग्जामिनर। ठीक है जी सर, अच्छा सर। ठीक है। रेडी? तू बड़ा टफ एग्जामिनर है वैसे। नहीं तो आप भी सर पता है करें, आप, मैं ये करूँ, आप बना के लाया करें सिनेरियो, ऐसे बनाएं कि जो अगले बंदे को ना आपने फंसाना है, आप बना के लाएं। ठीक ठीक है, ओके, तो है, यस। ओके लेट्स स्टार्ट। रेडी? यस। हाँ, ठीक है, ओके बिस्मिल्लाह। ओके। A 25-year male, young male, has been brought in the emergency department after sustaining a stab wound to the neck, left side of the neck. The patient is in respiratory distress. What will you do? Okay, so first of all, this patient is a critical patient. I will straight away start from airway. I will assess airway. If the airway is intact, How will you I assess will the airway? He is in respiratory distress. so I will try to, if it's urgent, and any obstructing element, and then I will Yeah. then I will assess if there is any damage to the major airway like trachea. How will you come to know that there is damage to the trachea? So if he's having any stridor, or if he's having any harsh sound with the breathing, Okay, the this wound is they're bubbling. The bubbles are coming out of the wound. yes, this is also a sign of major airway Yes. injury Now what will and you do? tracheal injury. So this patient needs immediate operation. This patient needs immediate management in the operation theater. I will immediately inform my OT staff So to what will bring you do in OT the and emergency department? What will you do in emergency department? So while shifting the patient, what will you do? I will. I can just put a dressing on the wound so that there is no air leak,
and I will give 100% oxygen to the patient. And meanwhile, I will take his blood samples. Now, you have applied the basic- pressure. The patient has his respiratory distress has increased. So now this patient may require, this patient requires endotracheal intubation if possible, and if intubation is not successful, then Oh, he may require how will- tracheostomy. Okay. So what are the precautions you will take while putting passing the endotracheal tube in this patient? So for endotracheal tube, I will call my senior anesthetist. He is He not will- available. Okay, so I will, if I have to do it, then I will first paralyze the patient with drugs. For that, some anesthesia. Okay, you have paralyzed it. Now you have attempted the endotracheal tube, but you are unable to visualize because there's a lot of blood. Okay, so this patient needs emergency airway management with either cricothyroidotomy or tracheostomy. Okay. For that, we can do needle cricothyroidotomy if he is in severe respiratory distress, followed by proper tube tracheostomy in operation theater. For that, I will call my ENT colleague. Okay, so right. So there's a patient. There's a wound. So there's blood is coming out from the wound, gush of there's a persistent bleeding, profuse bleeding from the wound. Okay, so this is after we have done tracheostomy, or to begin with. okay. So this patient, I will suspect some major vascular injury in this patient, and I will apply pressure on the wound to stop the bleeding. Meanwhile, I will instruct to send all his samples, including blood, complete picture, Okay. and you have applied the pressure, but the bleeding is still continuing. You applied the pressure over the wound, but the bleeding is still continuing. What will you do? So as the patient, this patient is unstable patient, and he has likely sustained injury to his major airway. I will call my vascular surgeon colleague, my senior, if he's available, and meanwhile shift the patient to OR and prepare for immediate neck exploration to assess the vascular injury. How will you explore the neck? We will explore the neck by transverse incision, and the site of the injury, we will try to assess where the bleeding is coming from, and if possible, if needed, we have to take the proximal and distal control of the injured vessel to assess the exact. Okay, so you will go through the transverse incision, and how will you get the proximal and distal? From where, at which site you will take the control? So we have to raise the flaps like we do in thyroid surgery. When we raise the flaps, we have how much time will it take to raise the flaps? I think it may take more. It may take 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes. The patient is profusely bleeding, still bleeding from the wound. It's a pulsatile bleed. So I will instruct my assistant to just put a pressure on the site of bleed. Meanwhile, I can expose the vessel. Is there any other way you have applied the pressure over the wound, but it's not being controlled? Is there any other way to control the bleeding? Meanwhile, you are preparing for your neck exploration. Okay. Okay. So how will you take the proximal control? What are you suspecting in this patient? As he has a pulsatile bleeding, he may have sustained injury to his major artery, that is carotid artery, common carotid, or maybe external or internal carotid artery. Okay. Okay. Now, how will you expose the carotid? Okay, so for carotid, we have to approach the carotid triangle, which is situated lateral to the thyroid, and we will check the pulsation, and we will then expose it. So there's a hematoma. Yes. Okay. Then we will again try to get the proximal control, which will be on the inferior side, and the distal control
So injury is at just above the clavicle. Injury is just above the clavicle. Yeah. Okay, so then I think we have to extend the incision, and if for In which better direction you will exposure, extend the incision? we may extend the incision in supraclavicular area, Supraclavicular area. Okay. Then and we have to remove a portion of clavicle if we need adequate exposure okay. to Okay. get access to the vessel. Okay. And basically, our goal is to take the control. Till the time we take the control, we will not be able to assess the damage sustained to the artery. You have extended the incision. You have extended the incision. You have exposed the subclavian vessels. So subclavian vessels is fine. It's okay. Okay. Yeah. So then what will your next step? So if the arteries are okay, then we have to look at the veins. Subclavian artery is okay. Subclavian artery is okay. Okay, and carotid is what did you tell about carotid? Carotid, yes, carotid is there's a hematoma, but you are still unable to get the proximal control. So would you like to? Huh? Okay. Okay. चलें. Let's इसको हम कर लेते हैं जो penetrating trauma को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. Obviously हमने पहले कोई डिसाइड तो नहीं किया था कि कौन सा टॉपिक आज करनी है. So whenever there's a trauma, so जैसे आपने कहते हैं, you start up with the ATLS protocol, airway, breathing, and circulation. So just get the information from the meanwhile. I will activate my trauma team, where the personal protective equipment. I'm rapidly see where are the injuries, where are the wound, what is the site of the wound? Is there only one entry exit? There's a single stab wound or multiple stab wounds? Is the patient is bleeding? There's a profuse bleeding, arterial bleeding. So if the patient is having respiratory distress with air bubbling, so in this patient, you need to be very careful because while putting doing the bag mask ventilation, because bag mask ventilation to give oxygen, you press the bag, so actually it can increase the site of the injury. उससे क्या होता है सर, कोई लेसरेशन ट्रेकिया के अंदर है या बाकी है तो वो एक्सपैंड कर सकती है. सिमिलरली यू नीड टू टेक द कंट्रोल, एयरवे कंट्रोल सबसे पहले हमने करना है. अब नेक्स्ट क्या करना है इस पेशेंट में? most of the time it's very difficult to put in the endotracheal tube. आपने उसको जो पैरालाइज करने से पहले you make sure, tell the examiner, I will make sure that everything is available for the suction, your alternative airway management, everything is available. Then you can go ahead and provided you ask me, because I will ask the senior anesthetist जो आपने अच्छा किया उस पे. अगर आप if you have a fiber optic laryngoscope, so with the help of the fiber optic laryngoscope, then you might be able to put in the endotracheal, right? और ब्लाइंड तो आपने बिल्कुल भी नहीं डाली, क्योंकि ब्लाइंड अगर आपने डाली तो हो सकता है पार्शियल लेसरेशन ट्रेकिया की, जिसको आप यू कैन कन्वर्ट इनटू फुल थिकनेस उसकी लेसरेशन हो सकती है. तो ये एक इसका है जो कैश पॉइंट है कि जो आपने बैग मास्क वेंटिलेशन और ब्लाइंड इंट्यूबेशन नहीं की, फाइबर ऑप्टिक को आपने यूज करना है. ये आपने सारा किया. तो वंस यू हैव सिक्योर्ड द एयरवे, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल नहीं हुआ कि आपको नहीं है, यू आर अनएबल टू फाइंड ट्रेकियल लेरिंक्स भी बिल्कुल उड़ा हुआ है, फ्रेमवर्क उसका बिल्कुल हुआ होता है, then not needle cricothyroidotomy, आप कहें cricothyroidotomy, सर्जिकल cricothyroidotomy वो करेंगे. अब उसमें भी बात कर anatomy is disturbed, you will not be able to find where is the cricothyroid membrane. अब उस सूरत में आपको हो सकता है फिर आपको ट्रेकियोटोमी जो भी होल मिल रहा है उसके अंदर डाल दें. आपने इस पूरे एल्गोरिथम में एक दफा करना है कि इसमें हमने जाना है. और मीनवाइल आपका बंदा क्या करेगा, ये एक बंदा कर रहा है, दूसरा बंदा क्या करेगा, ही विल मैनेज द ब्लीडिंग. अब ब्लीडिंग इनिशियल आपने अप्लाई द प्रेशर, बट द ब्लीडिंग इज कंटिन्यूइंग, दैट मींस डेप्थ में है, तो आप क्या कहेंगे, डिजिटल फिंगर अपनी डाल दें मीनवाइल, तो वहां पे उसको प्रेस कर दें. ठीक है. और क्या कर सकते हैं, यू कैन पुट इन द फोलिक एस्टर से ट्रैक के अंदर डालें, बैलून को इन्फ्लेट करें, उसको खींच लें और जो वूंड है उसको बंद कर दें, वो आपको मीनवाइल आपके टेम्पोनार्ड देगा. ठीक है. तो इस तरीके से आपने सबसे पहले इस पेशेंट को क्या करना है, एयरवे को अपने कंट्रोल करना है और ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है.
temporary measure लेने. Then you have to take the patient to the operation theater because the patient having hard sign, patient hemodynamic unstable with hard signs. Hard signs इसमें क्या थी? Bubbling from the wound, respiratory distress है, stridor है, और patient pulsatile bleed है, तो these are hard signs. तो आपने इसको obviously अपने थिएटर में लेके जाना. फिर जब जाएंगे थिएटर में जाएंगे तो उसमें आपने क्या करना है सर, इसमें होता है वर्टिकल इंसिजन देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मैस्टाइड, आप सीधा इंटीरियर बॉर्डर ऑफ जो स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड उससे लेकर नीचे तक पाएंगे. वर्टिकल इंसिजन दिएगा, रैपिड है, इट गिव यू द क्विक एक्सेस टू द वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स. आप उसमें जाएंगे, उसमें क्या करना है, यू नीड टू डाइसेक्ट अपने की स्किन पेल्टिज्मा, देन यू हैव टू रिट्रैक्ट द स्टर्नोमास्टाइड लैटरली और थायराइड इंटीरियरली. जब ये करेंगे देन यू नीड टू ओपन द कैरोटिड शीथ, उसमें एंटर होना होगा. अब कैरोटिड शीथ के ऊपर आपके ऊपर स्पीरियर होते एंजा सर्वाइकैलिस है, ठीक है. आपने बाकी भी चीजों को करना है, बीच में इंफीरियर थायराइड आर्टरी, आगे मिडिल थायराइड वेन, उनको भी लाइगेट करना पड़ता है, तब आप जाकर रिट्रैक्ट करेंगे चीजों को. और प्रॉक्सिमल अपने कंट्रोल इस पेशेंट में क्या कोई बिल्कुल नीचे था, तो आपने से करना है स्टर्नोटमी. ऑब्वियसली यू नीड टू इन्वॉल्व द प्लास्टिक सर्जन. आप नेक ट्रॉमा तो आपको थोरैकोटमी का सेट आपको करके स्टर्नोटमी करनी पड़ेगी इसके अंदर, ये प्रॉक्सिमल कंट्रोल लेने के लिए. आप एट टाइम आपको नीचे वाला भी देना पड़ता है, ट्रैप डोर जो नहीं होती थोरैकोटमी वाला, वो भी करना पड़ता है. स्टर्नोटमी का क्या फायदा होगा? हाँ स्टर्नोटमी का क्या फायदा होगा? हम किस वेसल तक पहुंच रहे हैं? हाँ स्टर्नोटमी सर, ये फायदा होगा ना कि आप नीचे उसको पकड़ेंगे ना, कैरोटिड इनोमिनेट को पकड़ेंगे, इनोमिनेट को पकड़ेंगे ना. लेफ्ट कैरोटिड तो निकल रही है ना, राइट वाली इनोमिनेट है ना, तो लेफ्ट को उसको पकड़ने के लिए आपको स्टर्नोटमी करनी पड़ सकती है ना, कि प्रॉक्सिमल कंट्रोल लेने के. जस्ट अबव द क्लेविकल है, तो वो तो आपको जगह ही नहीं देगी उसकी, प्रॉक्सिमल किधर लगाएंगे क्लैम्प. तो फिर उसके बाद आ जाएगा. फिर अगर आपने ले लिया, you have been successful in achieving the proximal control, then you have to assess the injury. What is the nature of injury? Is it just a laceration? Laceration, so you can do a lateral उसकी arteriography कर सकते हैं with the proline 50, right? अब आपके बीच में से it depends site of injury क्या है, ठीक है. बीच में फिर आपके कैरोटिड की बाइफर्केशन के ऊपर है, तो आप क्या कहते हैं, इंटरनल कैरोटिड जो एक्सटर्नल कैरोटिड है सॉरी, उसकी ट्रांसपोजिशन कर देते हैं इंटरनल कैरोटिड के साथ, और डिस्टल एंड को बांध देते हैं. सेगमेंट लॉस है, तो फिर आप क्या कहें, सेफनस वेन का ग्राफ डालना पड़ता है. और दूसरा इसका 1 सेंटीमीटर है, तो आपको प्राइमरी जो एनास्टोमोसिस किया जा सकता है अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर का बीच में लॉस है. तो ये तो हो गई इसकी वेस्कुलर इंजरीज. हाँ, इंटरनल जुगुलर का है, इंटरनल जुगुलर कैन बी लाइगेटेड, एक तरफ की है. फिर उसके बाद ट्रेकिया के, तो ट्रेकिया का आपने प्राइमरी रिपेयर करना है विद ट्रेकिया को किससे रिपेयर करते हैं? वाइक्रल, प्रोलीन, पीडीएस या प्रोलीन ना. और एसोफेजियल इंजरी है, तो एसोफेजियल इंजरी वही डबल लेयर पे उसको रिपेयर करेंगे. आपने बीच में देखना है कि मायोटमी को नीचे के म्यूकोजा अलग करके ऊपर वाला अलग किया, लेकिन दोनों के अंदर आपने स्टर्नोमास्टाइड मसल्स को लेके ना वेस्कुलाइट टिश्यू है. लेकिन अगेन बीच में हमने हेड एंड नेक सर्जन को इन्वॉल्व करना है, बाकी सारी चीजें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये चीजें हो सकती हैं कि इनके क्या तरीकाकार होगा. अब नीचे लोअर एंड पे, तो लोअर एंड पे सबक्लेवियन वेसल भी हो सकता है, उड़ी हो. अब सबक्लेवियन का भी तरीका क्या होता है कि आपको सस्पेक्टिंग के सबक्लेवियन वेसल से ब्लीड है, तो उसको टेम्परेरीली किस तरह होल्ड करेंगे, ईआर के अंदर है तो या इवन थिएटर में भी है. तो आप इनिशियली कहते हैं थोरैकोटमी ना, सेकंड इंटरकोस्टल में जाए, मिनी सी थोरैकोटमी की, उधर से अपनी फिंगर अंदर डाल दी और ऊपर क्लेविकल के इंटीरियरली ना आपने उसको प्रेस कर दिया. तो मीनवाइल क्या होगा, आप उसके स्टर्नोटमी या थोरैकोटमी करने के लिए आपको टाइम मिलेगा, वरना तो आपको फ्यू मिनट्स नहीं होंगे तो उसके अंदर पेशेंट तो क्लैप्स कर देगा. तो ये था मैं पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा का जो नाम है ना वो कर दे. अभी इसी तरह गन शॉट वुंड का अगर फॉर सिनेरियो, तो आपको ना कि जी कहाँ पे इसका है, एंट्री है, एग्जिट है, जोन कौन से वाला है, पेशेंट हीमोडायनामिक इसके स्टेबल है. 3 जोन होते हैं ना, 3 जोन होते हैं नेक के. अभी तो मैंने बताया था हीमोडायनामिक अनस्टेबल वो था, भी ये हार्ड साइन से. अगर मैं कहता हूँ जी आया पेशेंट स्टैब वुंड के सेम सिनेरियो, बट द पेशेंट इज फाइन, देन व्हाट विल यू डू? देन वी विल डू जी. फिर हम इसकी एक तो एंजियोग्राफी भी कराएंगे, सीटी एंजियोग्राफी. सीटी एंजियोग्राफी, राइट. और वेसल्स असेस करेंगे सारे. और दूसरा इसका और हम क्या करा सकते हैं, और मेनली यही होगा, सीटी एंजियोग्राफी से असेस. डॉपलर कराएंगे, डुप्लेक्स. अगर if the patient is stable,
there are no hard signs, patient is stable, and there is a platysma is breached, there is a violation of the platysma. The next step is just like abdominal trauma. वो जो पहले होता है ना जोन 1 2 3 का, वो उन्होंने खत्म कर दिया. अभी कहते हैं नो जोन अप्रोच, कोई जोन के नहीं है, स्पेसिफिक जोन की मैंने. नेक्स्ट स्टेप, पेशेंट इज स्टेबल, गेट द सीटी स्कैन विद सीटी एनजीओ. अब उसमें देखेंगे कि अगर तो नेगेटिव है, सीटी एनजीओ इज नेगेटिव, बट इसमें सीटी एनजीओ क्या कर सकता है, सीटी स्कैन की जो सेंसिटिविटी है ना फॉर द एसोफेजियल इंजरी, वो बहुत कम है, वो 30-40% है. तो इफ यू आर थिंकिंग यस एसोफेजियल इंजरी हो सकती है, उस सूरत में आप उसके लिए एसोफेगोग्राम या एसोफेगोस्कोपी करवाएंगे. ठीक, अगर लगता है कि नहीं नेगेटिव है तो बस दैट्स इट, फिर फर्दर कुछ नहीं है. लेकिन पॉजिटिव आ गया तो फिर उसके साथ मजीद आपने उसको देखना है कि जी आपने एसोफेगो करानी है, एसोफेगोस्कोपी थिएटर में, या आपने लिंगोस्कोपी करवानी है, ब्रोंकोस्कोपी करवानी है, डिपेंडिंग ऑन दी उसकी ट्रैक क्या है. सीटी स्कैन आपको बताएगा पूरा उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, ट्रैक क्या है, इंजरीज क्या क्या हो सकती है. पहले क्या होता था, जोन 2 वाली इंजरीज होती थी और उसमें देते ऑल जोन 2 जो भी आपकी स्टैब वुंड है तो उसको मैंडेटरी एक्सप्लोरेशन होती थी. अब मैंडेटरी एक्सप्लोरेशन के क्या डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक तो नॉन थेरेपेटिक, मोर देन 50-60% नॉन थेरेपेटिक होती है. दूसरे नंबर आप जाते हैं ना, वुंड इधर है तो आपको ये नहीं पता होता यार ये ऊपर की तरफ गया नीचे की तरफ गया हुआ है, तो यू कैन मिस द इंजरीज. ठीक है, तो आप कहते हैं नहीं जो सीटी कराएं उससे आपको ट्रेजेक्टरी का पता चलेगा, फिर उसके मुताबिक आपने फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन. अगर आपको जोन 1 या जोन 3 के अंदर वेस्कुलर इंजरीज हैं तो फिर उसमें भी एनजीओ का है अपना, सॉरी एंडोवेस्कुलर की जो है ना एनजीओ एम्बलाइजेशन और बाकी ये चीजें जो है उसके अंदर फिर आ जाती है रोल जो है ना. तो ये हमने जो ट्रॉमा का है ना, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, उसको आज हमने थोड़ा सा इन द फॉर्म ऑफ सिनेरियो जो है उसको कर लिया. वैसे एक बार जोन्स बता दे नेक के जरा वैसे. हाँ, जोन के सर ये क्लेविकल जो स्टर्न नाज से लेके प्रीकाइड कार्टिलेज, दिस इज जोन 1. जोन 1 राइट. अब इसके अंदर क्या है कि सारी थोरेसिक आउटलेट की जितनी भी चीजें हैं, ट्रेकिया, इननॉमिनेट वेसल्स, पीछे एसोफेगस आपकी आ गई, थोरेसिक डक्ट ऑन द लेफ्ट साइड वो आ जाएगी, और बाकी वर्टिब्रल आर्टरीज वो होंगी जो इसके अंदर चीजें आएंगी इसके अंदर. फिर क्रीकाइड कार्टिलेज टू एंगल ऑफ द मैंडिबल, एंगल ऑफ मैंडिबल तक. जोन 2 इसके अंदर आएंगी आपकी कॉमन कैरोटिड, उसकी बाइफर्केशन, इंटरनल जगलर. हाँ, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जगलर, वेगस नर्व, वेगस नर्व. बिल्कुल ये इसके अंदर आएगी. ठीक है, और ट्रेकिया, एसोफेगस वो तो है ही है. फिर उसके ऊपर वाली अबव द एंगल एंगल ऑफ ऑफ मैंडिबल से ले बेस ऑफ स्कल बेस तक. ऑफ स्कल तक, जोन 3 जिसमें इंटरनल कैरोटिड वो आ जाती है और बाकी आपकी वर्टिब्रल आर्टरीज आ जाती है. हाँ, वो आ जाती है. इसमें ये था कि अगर फॉर एग्जांपल जोन 3 का है, वेस्कुलर इंजरी, इंटरनल कैरोटिड है, उसको आपने एक्सपोज करना तो किस तरह करेंगे? ऊपर है और you have to take the patient to the operation theatre because patient unstable, hemodynamic unstable, then how will you explore it? कैसे करते हैं बताओ. हाँ, उसमें सर ये करेंगे, यही नेक का सी है ना, इसको जो पूरा हमने दिया था खोल लिया. अब जब खोल लिया, एक्सप्लोर किया तो स्टर्नोमेस्टाइड को लेटरली रिट्रैक्ट किया, और जो दूसरी स्ट्रक्चर ऊपर है तो प्रोटेड भी आएगा ना, तो बीच में ओमोहाइड मसल आएगा, उसको अपने डिवाइड करना है ओमोहाइड मसल को, और ऊपर जाएंगे तो डायगैस्ट्रिक मसल्स की जो बैली उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा. एंजा सर्वाइकैलिस पोस्टीरियर जो है, बेली. हाँ उसको डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, इसमें जब एक्सपोज ना इसके बावजूद भी ना हो रहा हो तो उसमें क्या करना है, जो ये जो एंगल है ना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, इसको सब लक्सेट करते हैं, इंटीरियरली ले आते हैं. वो किस तरह करते हैं, बेसिकली डेंटल वालों को बुला के वायर लेते हैं, जो जो इंसाइजर, लोअर इंसाइजर और अपर जो है ना मोलर, उनके दरमियान में उसको वायर को टाइट करते हैं, तो मैंडिबल को ना अपनी जगह से जॉइंट से टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो है वहां से मैंडिबल को आगे ले आते हैं, तो आपको एक जगह मिल जाती है. तो इस तरह इसको एक्सपोज करते हैं जो इंटरनल कैरोटिड को. तो इसका एक्सपोजर जो है सबसे मुश्किल है. तो ये है इसका जो ना. बस अगर सर यहाँ तक बात आ गई ना तो फिर इसका मतलब है कि हमारा भी एक्सपोजर मुश्किल है. अगर मैं वैसे बात करूं, ये ऑब्वियसली हमने हमने जो स्टार्ट पे उसको कहना है कि हमारा काम क्या है, ईआर के अंदर उस पेशेंट को एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन का और जो हेमरेज कंट्रोल है ना, वो हमने डिजिटल प्रेशर से फोलिस कैथेटर डाल के, इवन सबक्लेवियन वेसल है तो उसे मिनी थोराकोटमी जो करके ऊपर से प्रेशर दे. देखिए इतना तो बंदे को जनरल सर्जन को आना, आप गए तो ये नहीं कि हम उसको
देंगे, ऐसा नहीं है। तो इतना, हाँ, उसके बाद फिर देन यू कैन से कि जी आई विल आस्क द हेड एंड नेक सर्जन, योर thoracic सर्जन, आई विल इन्वॉल्व देम, उनको फिर बुलाएंगे। लेकिन इस तक तो लोअर लोअर हाँ, जोन 1 के लिए थोरेसिक सर्जन को इन्वॉल्व करना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी जोन हेड एंड नेक सर्जन, हेड एंड नेक सर्जन को जो है ना इन्वॉल्व हेड एंड करना नेक, है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म तो ये हो गया जी। तो मेरा ख्याल 3 सिनेरियो हमने कर लिए हैं। तो ये बीच में जो पूछ रहा था कि हेमरेज को कोई और तरीका है कंट्रोल करने का, वो कौन सा तरीका पूछ रहा हाँ था? यही है ना सर, जब आपने ओपन प्रेशर दिया था ना, मरीज को ओपन किया। ट्रैक है ना, ट्रैक है ना ऊपर। ये मेरे पास मुजफ्फराबाद में इस तरह पेशेंट भी था, जो इसी तरह ही ना स्टैब वुंड के साथ है, उनके कैंटीन पे लड़ाई हुई, और उसका बिल्कुल जस्ट अबाउट द क्लेविकल जो ना, यहीं पे करके उसका स्टैब था। और जब पेशेंट मैंने रिसीव किया, तो वो मैंने पता क्या किया सर, उसके फिंगर जो ना सिर्फ ट्रैक के अंदर डाल दी, वुंड के अंदर। अब मैंने थ्रू आउट उसके रखे मैं कोई, हमें जितना उसको नसीबे मिलते बुलाया मैंने, ब्लड लगवाया, मेरा घंटा पौना घंटा तो इसमें लग गया, पौना घंटे से भी ज्यादा लगा। सिर्फ हमने क्या फिंगर ना डाल के रखे, क्योंकि मेरी फिंगर इतनी सुन्न हो गई थी, बस रख के दबाए रखी थी वही, वो करोटेड की इंजरी थी ना, करोटेड में वो गया हुआ। तो वो डिजिटल प्रेशर, अब फॉर एग्जाम्पल डिजिटल प्रेशर से भी नहीं कंट्रोल होता, तो फिर एक दिया होगा डेप्थ में आपकी फिंगर भी नहीं पहुंच पाती। तो उसमें जो मैंने देखा था इसके ट्रॉमा की, उसपे जो हेमरेज कंट्रोल का, तो मैंने देखा फोलिक एसिड डालें उसी ट्रैक के अंदर, बैलून को इन्फ्लेट करें और पुल कर लें, और फिर वूंड को बंद कर दें। तो एक ये तरीका है कि ये इसको हेमरेज कंट्रोल कर, जो नेक के अंदर। लेकिन अब सबक्लेवियन वेसल से है, सबक्लेवियन वेसल का मतलब प्रेशर दे बंदा ट्राई नहीं कर सकता, उसका उन्होंने दिया होता कि आप सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में छोटा सी निक दें, इंटरकॉस्टल मसल को डिवाइड करें, और 2 फिंगर जो है अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, और जो सबक्लेवियन वेसल्स है ना, उनको क्लेविकल के साथ ऊपर प्रेस कर दें, ऊपर की तरफ। तो आपने एक आपका जो असिस्टेंट है या सर्जन है, उसने सिर्फ प्रेशर दिया हुआ है, और दूसरा बंदा थोरोकॉटमी करे। फिर आप जो खोल लिया, तो उसको फिर आप वेस्कुलर क्लैंप लगाएं। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे, तो आपकी इवन थ्रोकॉटमी करते करते पेशेंट जो है ना, वो फारिग हो सकता है। हम्म अच्छा तो ठीक है। मैं वही था, उस वहां पे हमारे पास ना तकरीबन हमें इतना टाइम जो ना लग गया। मैंने फिर ईएनटी का था हमारा, तो ईएनटी सर्जन को बुलाया, तो मैंने थ्रू आउट रखे रखा, अगले बार दूसरे बंदे ने उसको खोला, एक बंदे ने हमें से रखा, फिंगर ही मैंने दबा के उसके रखी हुई थी। तो फिर हमने करके उसको, तो फिर वो अल्लाह का शुक्र बच गया था पेशेंट। हम्म, चलो तो यार ठीक है, हाँ, ठीक है सर। चलते हैं। सो लेट्स समरी सर इसकी ना, कि आज हमने किया क्या है। हम्म स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सिनेरियो, आप अपने सर समरी बता दें, छोटा सा ना, कि फर्स्ट सिनेरियो था आपका, जो आपने यू हैव गिवन द सिनेरियो ऑफ सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो था ऑब्स्ट्रक्टेड ओब्लिक स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया इन अ यंग मेल, और उसकी प्रेजेंटेशन और उसका डिफरेंशियल और उसकी अर्जेंसी, और ड्यूरिंग सर्जरी उसमें क्या क्या आपको चीज़ें मिल सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन उसमें क्या क्या हो सकती हैं। हाँ, और टेक वो मैसेज इसमें क्या था कि हमने हिस्ट्री में जरूर उससे पूछना है कि आप इसके कैप पेशेंट को नाउजिया कॉन्स्टिपेशन वोमिटिंग। है, डिस्टेंशन है, फ्लैटस पास किया कि नहीं किया, आस्क अबाउट द स्वेलिंग ग्वाइनल रीजन के इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिनेरियो से रिलेटेड है ना। तो फिर देन यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली ठीक। पिक अप द डायग्नोसिस। और दूसरे वाला उस्मान आपका था, तो जस्ट गिव मी द सेलिएंट, उसकी हाइलाइट्स आप दे दें। Yeah, for perforated dudenal ulcer, women taking steroids and NSAIDs for a long time with the large perforated dudenal ulcer and late presentation. And we procedure has to be performed in that case. So post-operatively, we have to stop the NSAIDs, give proton pump inhibitors, and if it is associated with H. pylori, then take-home message is that H. pylori eradication therapy has to be given for at least 6 weeks, and after that, you need to have endoscopy to see the healing process of the ulcer, and also. NSAIDs are contraindicated for pain relief in these patients, and opioids are patient has to be switched on opioids if it's necessary to give pain relief in Okay. patient with peptic ulcer disease. Okay, thank you. So the third study was about the penetrating neck trauma. So the take-home message on the penetrating neck trauma is, so you need to rapidly assess the patient, keeping in mind the ATLS protocol. So starting with the airway. So in these patients, if you are suspecting airway injury, you need to be careful with the back mask ventilation and the endotracheal intubation. You need to arrange all those things
The blind intubation can convert the partial laceration into the full thickness laceration. And you need to have fiber optic laryngoscope and call for your senior anesthetist, because in these patients can be very difficult to put in the endotracheal tube. The patient, if the patient is having an arterial bleed, the patient having a profuse bleeding, so you need to control the bleeding with the help of the direct pressure, with the digital, putting the finger into the track. If you are unable to do control the bleeding, so you may have to put in the Foley catheter and for the tamponade, and then the exploration is through the vertical incision, just interior to the sternomastoid, that can be taken onto the chest as a median sternotomy. So for taking the proximal and the distal control. So then the tracheal injury, you can repair the tracheal injury primarily with the PDS or proline, and the esophageal injuries, but you need to keep a vascularized tissue in between both the repairs. So we covered the three scenarios. So thank you so much, Dr. Osman, Dr. Numan Tasneem, for joining and sharing your knowledge. Thank you so much. See you again. Thank you, Dr. Chalo, Shukar, Assalamu alaikum. for